Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum everyone and very good morning to all of my dear students. I hope that everyone is in good health. Well students, I am your teacher of subject English. So let's start today's lecture. Let me tell you first of all the day and date. So it's 6th of January 2021 and day is Wednesday. Okay, today is Wednesday. Let's move ahead to see the topic of today's lecture and about the unit as well. It's Unit 9 Beauty and the Beast Part 1. You must be very familiar with this Part 1 of Beauty and the Beast because we have read the story already in our previous lecture, and because in the last lecture we did the MCQs plus short question answer, so I have already give you the theme of this story as well. Okay, so you must know the theme of the Beauty and the Beast. That was very easy actually. Topic is that today we are going to do the long question answers. Okay, today we are going to do the long question answer, but before go to the topic of the long question answer, let me give you a brief theme of the let me recall you the Beauty and the Beast. Actually I have already described you very briefly, but let me recall you in short passage. Like Beauty and the Beast, actually it comprises on the some characters like Jack, Joseph, George, April, June, and the youngest is the Beauty. So Beauty is the main character in the story, and the Beast is the main one character who comes in the last. Okay, Beast comes in the last in the part 1 story. So when we are going to finish this book work or the long question answer, then inshallah we are going to start with the part 2 of the Beauty and the Beast. Then we will let know that what actually happened with the Beast and the Beauty. Okay, so in this part 1 we saw only the merchant who has grown up kids, like three girls and the two young boys. Okay, and April and June always been demanding to their father to get the jewelry and to get the new clothes every time. Okay, and Beauty is very pious. Beauty is very affectionate to her father. He never demand to her father to get something for herself, but only a rose when they have to face the loss of the many goods, and also they caught the fire in the warehouse, so they got lost very huge things of very huge things. So that's why the merchant and his sons went to the forest to get the job, to get some work. Okay, and there they wanted to take rest. Then they stayed in the कहाँ पे उन्होंने स्टे किया था, इन द बीस्ट होम. ठीक है, बीस्ट का एक पैलेस था दैट वाज वेरी बिग, वेरी ह्यूज, और उसके लॉन में उन्होंने जाके नाइट स्पेंड की थी. एंड देयर द मर्चेंट प्लक द रोज फॉर द ब्यूटी, एंड देन बीस्ट केम. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू, और बीस्ट जब आया था तो उसके बाद क्या होता है, वी विल लेट सी इन द पार्ट 2 ऑफ द ब्यूटी एंड द बीस्ट. नाउ आई एम गोइंग टू द long question answer. So dear student, listen me carefully because we have already done the 2 long question answer, I guess, or not. Okay, here you go. You can see what is the first misfortune that the family suffers. ठीक है, सबसे पहले देखें what is the first misfortune that the family suffers. So the first misfortune that the family suffers are the flames and that the warehouse was burnt with. ठीक है, जो warehouse को क्या होना पड़ा था. Alright, so the first misfortune that the family suffers are the flames that the warehouse was burnt with. यानी कि पहली जो बदकिस्मती थी फैमिली की वो ये थी कि उन्हें मुब्तला होना पड़ा था आग के साथ. ठीक है, जो उनके वेयर हाउस में लगी थी. नंबर 2 यू कैन सी हियर, वेयर डू द सन्स एंड द फादर गो एंड वाई. यानी कि फादर और बेटे किधर जाते हैं. ठीक है, द सन्स एंड द फादर गो टू द फॉरेस्ट टू गेट सम वर्क टू अर्न मनी. यानी कि वो कह रहे हैं कि जो बाप है और जो बेटे हैं ना, वो किधर गए थे, फॉरेस्ट गए थे टू गेट सम वर्क टू अर्न मनी, ताकि वो पैसा कमा सकें. ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन यू कैन सी हियर, व्हाट मेक्स द ब्यूटी एंग्री. किस चीज़ से जो बीस्ट
I'm so sorry, I'm going to repeat the question again. What makes the beast angry? किस चीज़ ने उस beast को नाराज़ कर दिया था, ठीक है. So if you remember the story, so you would let know कि जब merchant ने कैसल में से एक रोज़ उतारा था तो वो चीज़ उसको बुरी लगी थी, ठीक है. आंसर इज़ व्हेन द मर्चेंट एंटर्स द कैसल, जब मर्चेंट एंटर हुआ था कैसल में, महल में, एंड प्लक्स द रोजेस, और उसने तोड़े थे गुलाब के फूल. दिस मेक्स द बीस्ट एंग्री, इस चीज़ ने बीस्ट को एंग्री कर दिया था. ओके, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ द गिवन आंसर्स एज वेल. अदरवाइज इफ यू डोंट get it visible, so you can just ask me in the group or wherever individually. You can inbox me the teacher, I want the answer of this given question, so I'll send you. Okay, next you can see here. All right, this is the question number 4. इन वट वेज इज़ ब्यूटी अ गुड पर्सन? आपको कैसे लगता है कि जो ब्यूटी है एक बहुत अच्छी इंसान है? सो आंसर इज़ ब्यूटी इज़ अ गुड पर्सन. ब्यूटी बहुत अच्छी इंसान है बिकॉज शी फील्स द पेन, क्योंकि वो फील करती है पेन ऑफ अदर्स, दूसरों के दर्द को फील करती है. एंड लव्स हर फादर, और अपने बाबा को प्यार करती है मोर देन एनीवन एल्स, कि इतना कोई नहीं कर सकता, ठीक है. ब्यूटी इज़ अ गुड पर्सन बिकॉज शी फील्स द पेन ऑफ अदर्स एंड लव्स हर फादर मोर देन एनीवन एल्स. ओके, नाउ वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 5. what is the second piece of bad news for the family? second piece of bad news क्या थी फैमिली के लिए? दूसरी बुरी न्यूज़ क्या थी? so the answer is the second piece of bad news is the loss of new goods brought by the ships. ठीक है, जो दूसरी बैड न्यूज़ थी फैमिली के लिए वो लॉस था, नुकसान था, ऑफ न्यू गुड्स, नई चीज़ों का, ब्रॉट बाय द शिप्स, जो कि जहाज़ के ज़रिए लेकर आई जा रही थी, ठीक है. पहला लॉस क्या था? वेयर हाउस में आग लगी थी. दूसरा लॉस था, सेकेंड लॉस वॉज द लॉस ऑफ द न्यू गुड्स, यानी कि कपड़ों का लॉस था, जो कि चीज़ों का, जो कि शिप में डूब गई थी. नंबर 6 क्वेश्चन. वट वॉज द रिएक्शन ऑफ द 3 daughters? उन तीनों बेटियों का क्या रिएक्शन था व्हेन दे हर्ड द न्यूज़ दैट द मर्चेंट्स गुड्स हैड बीन लॉस्ट एट सी? जब उन्होंने ये सुना कि ताजिर की चीज़ें सारी की सारी गुम हो गई हैं, लॉस्ट हो गई हैं, खो गई हैं. व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट देम? हमें ये चीज़ें क्या बताती हैं? कि अब आपने उसकी बेटियों के बारे में सुनना है, ठीक है. आंसर इज April and June were concerned about the jewels and dresses. अप्रैल जून का जो कंसर्न था वो सिर्फ ज्वेलरी और ड्रेसेस के साथ था. दे वुड नॉट बी एबल टू हैव, उन्हें लगा कि हमें ये चीज़ें दोबारा नहीं मिलेंगी. वेयर एज ब्यूटी कमेंटेड डैट, जबकि ब्यूटी ने कमेंट किया डैट द न्यूज़ वॉज टेरिबल, कि जो न्यूज़ थी वो बहुत ज़्यादा बुरी थी. जूल्स एंड ड्रेसेस आर नॉट एसेंशियल आइटम्स, उसने कहा कि जो ज्वेलरी और कपड़े हैं वो बहुत हमारे लिए ज़रूरी नहीं है. दिस टेल्स दैट अप्रैल एंड जून आर सेल्फिश, ये हमें चीज़ें बताती हैं कि अप्रैल और जून जो दोनों बहनें हैं वो बहुत ज़्यादा खुदगर्ज थी, वो सेल्फिश थी. ब्यूटी सीम्ड मोर कंसर्न अबाउट हर फादर, दैट्स व्हाई टेल्स अस कि ब्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है अपने फादर के लिए, ठीक है. So that's all for today's lecture. There are 6 question answer given which you need to put down on the notebook. Okay, homework is that learn and write long question answer on your notebook. I hope that you enjoyed your lecture. This is very easy peasy work because we have already read the story very well. So give the topic name, write the date, draw the margin line. When you finish one question along with the answer, leave one line and then go to the question number 2. Okay, that's all for today's lecture. Take care of yourself. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.